बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपकी मिस बॉटनिस्ट स्वाति बत्रा। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम क्या करने वाले हैं? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। चलिए वेट करते हैं बच्चों के फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए कौन कौन से बच्चे हैं हमारे पास आज। हाँ जी, डाइवर्सिटी, वेरिएशन लिविंग वर्ल्ड में। यूनिट का नाम क्या है? डाइवर्सिटी। वेरिएशन मतलब बायोडाइवर्सिटी। देर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज ऑन द अर्थ सरफेस। डाइवर्सिटी है कि नहीं है? बट कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस है? लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा आप लोगों ने? गुड आफ्टरनून धीरज, तीरथ राज। सो कौन सा ब्रांच ऑफ साइंस है विच इज डीलिंग with the scientific classification? Tell me. Good afternoon, surgeon. Good afternoon, Deepu Ratlami. कैसे हैं आप लोग? Good afternoon, Dr. Priyansh. हाँ जी. All right. So good afternoon, everyone. How to crack IBO? मीनल, इसके लिए मैं एक सेशन देने वाली हूँ बहुत जल्दी, ओलंपियाड का। किस किस को सेशन चाहिए? ओलंपियाड का सेशन मैं लेने वाली हूँ बहुत जल्दी। गुड आफ्टरनून शुभम। तो बहुत जल्द एक सेशन होगा जिसके अंदर आईबीओ का, इंटरनेशनल ओलंपियाड, कैसे क्रैक करना है। तो पिछले साल सिल्वर मेडल बैक किया था मेरे एक बच्चे ने, अमृतांश निगम। आईबीओ के लिए प्रिपेयर करवाया था हमने। तो एक सेशन हम लोग बिल्कुल लेने वाले हैं। अमृतांश निगम, आप गूगल भी कर सकते हैं, सिल्वर मेडल प्रीवियस ईयर। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करें भाई। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। लेक्चर 3, 1 and 2 अब फटाफट से फास्ट ट्रैक पे रिव्यू कर सकते हैं। बट अगर 1 and 2 नहीं भी किया, आज भी आपने स्टार्ट किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। सो इन द प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड विद व्हाट? In the previous class we started with the kingdom Monera. We did the general characters of kingdom Monera, right? हम लोगों ने क्या किया था? जनरल कैरेक्टर्स स्टार्ट किया था कि नहीं किया था हमने किंगडम मोनेरा का? बोलो जी। राइट जी, किया था। ऑल राइट, तो हमने जनरल कैरेक्टर्स किया था। जनरल कैरेक्टर्स में क्या क्या किया था हमने? क्या क्या किया था बताइए मुझे, बोलिए क्या क्या किया था। गुड आफ्टरनून अर्पिता, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कैसे हैं भाई? हाँ हाँ जी, हाय अर्पिता, हाय मयूरी, हेलो, हाय प्रेरणा, हाय अर्पिता। कौन बताएगा मुझे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये मुझे कौन बताएगा? बताइए जी, कौन बताएगा मुझे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज दिस? व्हाट इज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन? हु इज गोइंग टू टेल मी? बताइए। हाँ जी बताइए। हाय मसूदा। ओके okay, so there was some error here. I have just loaded the slide again. All right, क्या आपको स्लाइड दिख रही है प्रॉपरली? दिख रही है आपको एक एक स्लाइड? एम आई ऑडिबल, विजिबल? स्लाइड प्रॉपरली नजर आ रही है? एक एक स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, ऑल राइट, चलिए। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में क्या किया था? बैक्टीरिया की शेप्स करी थी हम लोगों ने, राइट? करी थी ना बैक्टीरिया की शेप्स? ऑल राइट, अब हम लोगों को शेप्स। हाई गुड आफ्टरनून अफाक, बंगश, हेलो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, स्टार्ट करें जी। तो सबसे पहले हमने जनरल कैरेक्टर्स और शेप्स तो हम लोगों ने कर ली थी पिछली क्लास में। अब हम लोगों को आज क्या करना है? हम लोगों को करना है कौन सा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के टाइप्स करने हैं। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, यस वेरी गुड डॉक्टर प्रियांश, ठीक है। सो दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर is very simple but they are very complex in behavior, right? Bacteria shows the most extensive metabolic diversity, right? Bacteria सबसे ज़्यादा extensive
मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है। समझ में आ रही है बात? और पहला टॉपिक आज का हमारा क्या रहेगा? हाय दिव्या, आर्कीबैक्टीरिया, राइट? आर्कीबैक्टीरिया, ओके। हाँ जी मैम, प्लांट डाइवर्सिटी बिल्कुल, मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ, डॉक्टर सचिन कपूर पढ़ाते हैं ज़ूलॉजी, राइट अफाक? ओके, सो आर्कीबैक्टीरिया में क्या पढ़ना है हम लोगों को? इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे, आर्की का मतलब ही क्या होता है? आर्की का मतलब ही क्या है? आर्की मतलब होता है प्रिमिटिव, राइट? आर्की का मतलब क्या है? प्रिमिटिव। क्लियर है बच्चा लोग? आर्की मीन्स प्रिमिटिव। तो अगर हम प्रिमिटिव की बात करें तो प्रिमिटिव की हमें बात यहाँ करनी है। आर्की मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब एंशियंट, एंशियंट मतलब पुराना, राइट? जो दुनिया की हर एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको नजर आएगा। कौन? आर्कीबैक्टीरिया, राइट? हाइड्रोथर्मल वेंट्स, क्या है हाइड्रोथर्मल वेंट्स? जहाँ पे हॉट वाटर गीजर्स बोलते हैं, जहाँ पे 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, सॉल्टी मार्शेस, सॉल्टी एरियाज, जहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंडीशंस आर देयर, राइट? एंड यस, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स वेयर टेम्परेचर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? ठीक है, क्लास के नोट्स मुन्ना आप एलिक्सर चैनल पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारे नोट्स हैं बच्चा, आप चेक करिए वहाँ पे नोट्स। ओके, सो आर्कीबैक्टीरिया, दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दे आर लिविंग फॉसिल। व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग फॉसिल? सपोज वन, देयर इज अ फॉसिल, एक वर्ड होता है फॉसिल और एक होता है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब है इट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, बहुत पुराने से, बहुत पुराना वो अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट है, राइट? लेकिन अभी वो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, फॉसिल तो फिनिश हो गया है। लिविंग फॉसिल का मतलब है बहुत पुराना, इट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस एंड इट इज स्टिल प्रेजेंट, दैट इज अ लिविंग फॉसिल, right? Okay, I am using English language, Durga Prasad. It can tolerate extreme conditions like high temperature, anaerobic conditions, low pH, salty conditions. So they can tolerate extreme conditions and they are gram negative. In the cell unit of life chapter, we are going to discuss, and also when we'll go to plus, we will discuss gram staining because we have certain limitation here. So when we go to plus platform, we are going to discuss about what is gram positive, gram negative, gram staining, right? So यहाँ पे एक briefly I can tell you कि gram staining, gram एक stain होता है, gram stain. So those bacteria which retain the gram stain, they are called gram positive, and those which do not retain the gram stain, they are gram negative, right? Clear है सबको बच्चा लोग? Clear है? आ रहा समझ में? So how archaebacteria, they are different from eubacteria. How archaebacteria, they are different from eubacteria. The eubacteria cell wall, it is made up of murine or peptidoglycan. Whenever there is a term PG, PG means peptidoglycan, right? ठीक है? लेकिन आर्कीबैक्टीरिया को अलग क्यों किया? बिकॉज आर्कीबैक्टीरिया में स्लाइटली डिफरेंट कॉम्पोजिशन है फ्रॉम म्यूरिन. इट इज सूडोम्यूरिन. सूडो मीन्स फॉल्स, राइट? तो आर्कीबैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन, दैट इज फॉल्स म्यूरिन, और यू बैक्टीरिया में म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन. Right. Now, very important concept that I want you to know. Very important concept. यूबैक्टीरिया के अंदर जो लिपिड्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, look at this very carefully. यूबैक्टीरिया में जो लिपिड्स हैं, the phospholipids are arranged in bilayer, as you can see. फॉस्फोलिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं,
In the cell membrane, the phospholipids which are present, they are bilayered, they are double layered, whereas in archaebacteria, it is monolayered appearance. Why? It is monolayered appearance. Why? Because the tails are completely overlapped, and sometimes you see that tails are joined like this. When the tails are joined like this, or there is complete overlapping, किसकी overlapping है? There is complete overlapping of the tails. Sometimes the tails are joined और there is complete overlapping of the tails. जब tails की हमें complete overlapping नज़र आ रही है, complete overlapping है, तो it will give the appearance of monolayered, right? Clear है बच्चा लोग? चलिए next, NCERT is not mentioning anything about the cell membrane. NCERT mentions that what is so special about archaebacteria, which helps archaebacteria to tolerate the extreme conditions. So what is so special about archaebacteria? That is differential nature of cell wall. Differential nature of cell wall. Differential nature means किससे different है? Eubacteria से different है, right? So differential nature of cell wall means it is different from the eubacteria, which is helping the archaebacteria to tolerate the extreme conditions, right? Okay. So archaebacteria के we are reading about archaebacteria, and archaebacteria के we have how many categories? We have how many groups? So archaebacteria का we have 3 groups. कितने groups हैं archaebacteria के? Archaebacteria के we have 3 groups. We have 3 classes. कौन सी classes हैं? What are those 3 classes? Hi. कोई बात नहीं अंजुल मिश्रा, जल्दी से join कर लीजिए भाई. We have 3 classes: methanogens, we have halophiles, and we have thermoacidophiles, right? तो यहाँ पे easy करने के लिए I have categorized that habitat कैसा होगा? What about nutrition? What about respiration? So first of all, we will talk about methanogens habitat. Methanogens are found in marshy areas, swampy areas. Marshy and swampy areas means दलदल वाले areas जहाँ पे water logging होगी, where water logging is taking place. Also in the rumen of cattle, rumen, cattle के अंदर compound stomach होता है. तो rumen of cattle, rumen is a part of compound stomach. So cattle के अंदर, ruminants के अंदर वो animals जो चुगाली करते हैं उन्हें बोलते हैं ruminants, right? Cattle like cow, buffalo, right? So ruminants के अंदर पाए जाते हैं, okay? They are found in the ruminants, okay? Now, what about halo? Halo means salt. Phile means loving. So halophiles are found in all the areas जहाँ पे high concentration of salt is there, like in tidal pools. They are found in oceans, salt lakes, brines, lagoons, oceans. So in all the areas where salt concentration is high, in fact, if you want to grow in lab, just for your knowledge, you can take 25 to 30% NaCl. If you want to grow in the lab, you can take on a Petri plate, you can take 25 to 30% NaCl and you can grow halophiles on them, right? What about thermoacidophiles? Thermo means high temperature, 80 to 85 degrees Celsius. There are certain thermoacidophiles which can resist 100 degrees Celsius temperature, but a general range is 80 to 85, and the pH, acido means low pH, they can survive in
low pH till 2, right? So they are specially found in, yes, very good, Dr. Priyansh, hot water springs, which we have already discussed, and hydrothermal vents, right, where very high temperature and low pH is there, right? Okay. Then, now, if we talk about, किसके बारे में बात करें? If we talk about nutrition, methanogens are chemoautotrophs. I told you in the first lecture that अगर खाना बनाने के लिए, if you want to make food, you want to do CO2 fixation, and if the energy is coming from chemical reactions, it is chemoautotroph, whereas halophile, it is heterotroph, it is dependent on the other organism, and also thermoacidophile, it is chemoautotroph, right? Clear? Okay. Then, yes, very good, Priyansh. Examples we are going to discuss in the next slide. Respiration. Methanogens are obligate anaerobes. Mean, what do you mean by anaerobe? Anaerobe मतलब it doesn't require oxygen. Oxygen नहीं चाहिए. Obligate मतलब compulsory. मतलब oxygen के बिना, without oxygen, it can also survive, right? Then, halophiles are facultative anaerobes, right? And this thermoacidophile, it is also facultative anaerobes. Facultative means sometimes, kabhi kabhi, right? So I'll just write here that facultative means sometimes, kabhi kabhi, that means normally they respire in the presence of oxygen, but sometimes they can also switch to anaerobic mode when sufficient oxygen is not available in the environment, right? Crystal clear? So, kabhi kabhi anaerobes, most of the times aerobes. All right. Examples: methanogens, methanobacterium and methanococcus. देखो, methano word आ गया तो understood ही है that they are talking about methanogens, right? Like suppose if I talk about halobacterium, halococcus, so it automatically means it is a halophile. Like if I say thermoplasma, thermoproteus, so thermo prefix is there, it automatically means it is thermoacidophile, right? Is it clear? So if I ask a question here, let's say if I ask a question here that which bacteria will be responsible for the production of biogas, let me see who all can answer. Which bacteria is responsible for the production of biogas? Biogas production के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा? कैन यू टेल मी? बायोगैस प्रोडक्शन के लिए वेरी गुड, क्या होगा? यस, methanogens. So this was a neat PYQ question, neat PYQ, that responsible for biogas production. Why? Because methane, it forms an important constituent of biogas. 50 to 70% of the biogas is composed of methane. Now what do? Methanogens, they utilize CO2, methanol and formic acid. Formic acid, HCOOH, formic acid. So they utilize CO2, methanol and formic acid, and by utilizing they are forming methane. Methane, which is an important constituent of biogas. If I say, which are the, out of these, another question, out of these, which are the maximum organisms found in the cattle yard? जो cattle yard में
काउ के डंग में, कैटल यार्ड में आपको दिखेंगे, कैटल फील्ड्स में दिखेंगे, देन ऑब्वियसली अगेन द आंसर विल बी मिथेनोजेंस, राइट? इज दैट क्लियर? चलिए, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट अबाउट हैलोफाइल? हैलोफाइल के अंदर, व्हाट डू यू मीन? हैलो मीन सॉल्ट लविंग. हाउ दे आर सर्वाइविंग इन salty environment? They don't have any sap vacuole. Sap vacuole भी नहीं है halophile में. So how are they surviving in the salty environment? Halophile, they accumulate salt in their bodies, right? With salt, KCl. So they accumulate KCl in their cells. अपने cells में KCl को accumulate करते हैं कौन? Halophiles. And when they are accumulating KCl, they can reverse the flow of water. Why? You remember osmosis by accumulating salt, right? They can reverse the flow of water. Otherwise, तो throughout the life, halophile की body से तो water जाता ही रहेगा, बाहर ही जाता रहेगा. They will get plasmolized, right? But they do not get plasmolized. Why? Because they have a certain adaptation. They are accumulating KCl in their cells, right? What about thermoacidophiles? Thermoacidophiles, when they will be having oxygen, they will convert sulfur into H2SO4. And when they do not have oxygen, when oxygen is absent, they will convert sulfur into H2S. But they are facultative anaerobes. Most of the times oxygen will be present. So first reaction, this reaction, it will be more common. That is why the medium is going to turn acidic. I hope it is crystal clear till here. The three groups, the three classes are clear of archaebacteria. So this I have incorporated a neat PYQ question. A neat PYQ question. That archaebacteria, it's a unique group of bacteria which has many similarities to eubacteria. Some features resemble eukaryotes, and there are certain unique, new, novel features which are not found in any other group. और किसी group में नहीं पाया जाता है. Right. Now, which are the features of archaebacteria which are resembling? किसको resemble कर रहा है? Eukaryote. When? Do you know what is translation? My voice is very low. Okay, I'll just check. Now is it clear? Now? Okay, all right. So, archaebacteria, do you remember what is translation? What is translation? Translation क्या है? Translation मतलब होता है amino acids का बनना, formation of amino acids. So when in archaebacteria and eukaryotes, translation is there. The first amino acid, it is methionine, and in eubacteria, the first amino acid, it is formylated methionine. So it was an Ames PYQ question. Ames PYQ. Archaebacteria, eukaryote को how it is resembling? Archaebacteria and eukaryotes are resembling. किसके अंदर? Archaebacteria में the first amino acid is methionine, and in eubacteria the first amino acid is formylated methionine. Very good, Mayush. Good, Divya and Dibesh. Okay. Introns and exons. Exons and introns, more of them will be dealing in genetics. Exons are coding sequences which form RNA proteins. Introns are non-coding sequences which are not forming the proteins, right? So eubacteria is having only exons, whereas archaebacteria and eukaryotes, they are having introns as well as exons. Another important feature, neat PYQ. So all the PYQs will be there in the notes, right? Then rest of the amino acid, Faizan, obviously they will be formed. We are just talking about, bacha, the first amino acid. Now, you must have read in chemistry levorotatory and dextrorotatory. Eubacteria,
has L and D amino acids, both of them, whereas in Archaebacteria only L amino acids are present and D amino acids are absent. Archaebacteria में D amino acids नहीं होते हैं and only L amino acids are present. I hope the question is clear to everyone. Okay, so these questions are clear, these points are clear. Neet PYQs, AIMS PYQs. Jaldi se, I want a round of likes. If you're liking the session, loving the session, I want some likes. Jaldi se. Okay, so now, as I've already told you, that Archaebacteria lacks peptidoglycan, right? So we have already discussed obligate fact. जो मैंने समझाया है वो सब कुछ यहाँ पे आपको PDF में written form में भी available है, which I have already discussed with you people already. Thank you so much Dibesh. ये already पूरा हम discuss कर चुके हैं. Marshy areas, ruminant, you can see. Good slides. देखो biogas reactor दिखाया है, methanogens in biogas production, right? Okay. Then halophile भी discuss कर दिया. Okay. One important feature about halophile. Listen to me very, very carefully. Okay. This we have done. This we have done. Okay. Thermoacidophiles. Hydrothermal vents also. देखो pictures देखिए. Already we have done. आपको pictures देखनी है. Hydrothermal vents, hot water spring. देख लिया pictures? Okay. चलिए जी. Now, Archaebacteria सबको समझ में आ गया? Archaebacteria is clear. I missed no, you only missed 2 lectures that you can review Faizan. Archaebacteria clear हो गया. Now can we move to cyanobacteria? Can we move to cyanobacteria now? Okay. Now let's move to cyanobacteria. Cyanobacteria are also called blue-green algae. Blue-green algae? According to two kingdom, ध्यान से देखिए यहाँ पे, according to two kingdom, cyanobacteria were placed under Plantae, but according to 5 kingdom, they are placed under Monera, right? 5 kingdom के अंदर Monera में, and बिल्कुल अरहान अभी आ रहे हैं हम क्लोरोफिल पे भी, and 2 kingdom के according Plantae पे, right? So 2 kingdom के according ही हम cyanobacteria को cyanophyceae, myxophyceae में भी used to place, right? It is the largest group of cyanobacteria. It is a largest group of gram-negative bacteria. It's the largest group of gram-negative bacteria. Archaebacteria were also gram-negative, right? So what do we now? There are 2 groups, Archae and Eubacteria. Archaebacteria में we had 3 classes, methanogens, halophiles and thermoacidophiles. Now if we come to cyanobacteria, Eubacteria के अंदर काफ़ी सारे groups हैं. In Eubacteria we have cyanobacteria, we have mycoplasma and we have actinomycetes. So the first group in Eubacteria that we are discussing is we have cyanobacteria, right? Okay. इस चैप्टर के PYQs भी तीरथराज बहुत जल्दी होंगे, प्रॉब्ली नेक्स्ट 2 डेज में एक बार सेशन रखती हूँ मैं तीरथराज. ओके, सो cyanobacteria, very very important points. NCERT maps है ये. NCERT maps मतलब NCERT के points जो word to word हमें line to line we should know what NCERT writes. Cyanobacteria have a rigid cell wall. Obviously, it's a eubacteria. That means it will be made up of peptidoglycan or murine. And if motile, hi Ansh, yeah, I will just check my telegram afterwards. And if motile
if motile, I have already told you this point, if motile, आज तक there is no cyanobacteria discovered which shows flagella. That means if you get a question that cyanobacteria are characterized by non-motile stages throughout their lives, non-motile stages throughout their lives, so that statement will be correct. NCERT, they are just playing safe कि if motile, अगर कभी motile discover हुआ तो उसमें flagella होगा, but आज तक there is no cyanobacteria discovered which shows presence of flagella. That means rigid cell wall. And if motile, अगर कभी motility दिखाता है, if motile, right? So अगर बोलेगा are cyanobacteria motile or non-motile, we will write cyanobacteria, they are non-motile. They are called blue-green algae because they resemble algae. They have pigments, right? They have chlorophyll A. Yes, इनके पास chlorophyll A है, chlorophyll B नहीं है. They have chlorophyll A and they are photoautotrophs. They can manufacture their own food with the help of light, right? Okay. Now, in photosynthesis, we are going to discuss that there are certain photosystems in plants, PS1 and PS2. Photosystems, PS1 and PS2. What is a photosystem? Photosystem is a group of pigments which are involved in photosynthesis. पूरी दुनिया में, in the entire universe, only cyanobacteria has the photosystems similar to the plants. So cyanobacteria has photosystems, that is PS1 and PS2, similar to the green plants. That's why you call them as photoautotrophs, right? Now, unicellular हो सकते हैं, कॉलोनियल मतलब बहुत सारे सेल्स ऐसे कॉलोनीज में दिख सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो बी फिलामेंटस लाइक दिस. ऑब्वियसली मल्टीसेलुलैरिटी के अंदर फिलामेंटस इज राइट, फिलामेंटस इज एडवांस्ड. बेटा क्या समझ नहीं आया आरती बच्चा बताइए? रिजिड सेल वॉल है, मोटाइल होगा तब फ्लैजेला होगा, लेकिन अगर पूछेगा मोटाइल है या नॉन मोटाइल है तो यू आर गोइंग टू मार्क दे आर नॉन मोटाइल. क्लोरोफिल ए है, राइट, क्लोरोफिल ए सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स. फोटोसिस्टम्स होते हैं ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, राइट. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉलोनीज, अभी मैंने बताया कि बहुत सारे सेल्स अगर ऐसे इकट्ठे होते हैं तो ये कॉलोनी है. Colonies are surrounded by a sheath, a jelly-like sheath. That is why आप देखो in the rainy seasons you tend to slip. Rainy season में slip हो जाते हैं. That is because of that chi. What is that chi? That chi is blue-green algae. It is BGA. So this is the gelatinous sheath, jelly-like sheath, right? Gelatinous. और mucilaginous sheath, mucilaginous covering, right? Clear है आरती? अब clear है बच्चा? And sometimes you see that काई जम जाती है एक water tank के आसपास, BGA जम जाता है. So कई बार many a times polluted water bodies के अंदर भी blooms मतलब excessive growth हो जाती है. Excessive growth. They often form blooms in polluted water bodies, right? Blooms मतलब excessive growth जिसमें कुछ unpleasant odor या scum सी एक thick deposit हो जाता है, right? Okay. Can I go further with cyanobacteria? Now, look at the beautiful pictures. Yes, we know that they do photosynthesis, they release oxygen. They are the only bacteria
only bacteria evolving oxygen, only bacteria evolving oxygen. पूरे यूनिवर्स में एंटायर यूनिवर्स में, तीरथराज हेट्रोसस की बात अभी कर रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है बच्चा. सो पूरे यूनिवर्स में द ओनली बैक्टीरिया विच आर शोइंग ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज साइनोबैक्टीरिया. Right? Is that clear? Okay, let's go further. Now by introducing oxygen to the primitive atmosphere, they have paved the path for the evolution on the earth. Oxygenic forms evolve कैसे करती है अगर साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन ऐड नहीं करता, right? So they are the most, मतलब they have evolved, they have added oxygen to the environment. Clear? Where are they found? Fresh water, marine water, also found in hot water springs where archaebacteria are found. Clear? Now, the next point. Moist soil में देख सकते हैं, right? Red Sea, very very important question. सारे red वाले नाम we will write collectively. So sometimes they confuse you, red tide and red sea. So this was a neat PYQ, red sea. It is not red tide, it is red sea. Red tide is due to dinoflagellates. Red snow is due to chlamydomonas, right? Red rust is due to cephalurose, right? So we are going to write the entire thing collectively, but for now we should know red sea and red tide. So red tide we are going to discuss in Protista. It is due to dinoflagellates. As of now we have to discuss, hi Sumit, we have to discuss about red sea. So red sea, red क्यों है? Why it is red? Because of a BGA, Trichodesmium erythraeum, right? Trichodesmium erythraeum. Now, the funda behind it. What is the funda behind it? Yes, Trichodesmium जो है एक BGA है. Trichodesmium एक BGA है which is making the sea red. Why? Because BGA have pigments. कौन सी pigments? Phycobilins, right? Phycobilins में सबसे ज़्यादा कौन सा phycobilin है? First of all, I'll tell you all about the three phycobilins. कौन से? C stands for Cyanophyceae, C phycocyanin, C phycoerythrin, right? C allophycocyanin. So tell me the colors. Phycocyanin, it is blue in color, erythrin in. 3 point कौन से बताऊँ बेटा? 3 point कौन से आती? Red, and allophycocyanin is light blue in color. So सबसे ज़्यादा generally it's a blue green algae. So mostly C phycocyanin is dominant, right? But यहाँ पे BGA show a very different phenomena. कौन सा different phenomena? They show a phenomena called, which phenomena? Gaidukov's phenomena. Yes, the BGA, they show Gaidukov's phenomena. और Gaidukov's phenomena क्या होता है? Can anybody please tell me? The BGA can change their body color. They can adjust the amount of pigments by lowering down or increasing the amount of pigments depending upon the wavelength of the light available, right? So Gaidukov's phenomena या फिर बोलते हैं CCA, complementary chromatic adaptation. Complementary chromatic adaptation
मतलब BGA क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी कलर को, अपने पिगमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, अमाउंट को बढ़ाकर या अमाउंट को कम करके पिगमेंट्स के, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट that is available. That is Gaidukov's phenomena. Now I want all of you to write the definition of Gaidukov phenomena. I am going to check in the next class. You are going to send me on my Telegram channel. I will check that how you are making down the notes, right? Okay. Okay, let's go further now. Now, already discussed, it's not visible. It's not visible, Sumit? Okay. I think it's visible to everyone. What I am writing is not visible? Or is it visible? Okay. Now, unicellular colonial filamentous. Now tell me, this is a question for all of you. ये जो algae मैंने यहाँ पे डायग्राम NCERT का डिपिक्ट किया है, वो यूनिसेलुलर है, वो कॉलोनियल है, या वो फिलामेंटस है? बताइए जल्दी से, बताइए, बताओ 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 जल्दी से कि ये एल्गी क्या है, ये बीजीए क्या है, क्या है ये बीजीए? बताओ, टेल मी. Okay, what I am writing is not visible. Okay, I'll just check. Now I am writing it again. So cyanobacteria के अंदर यहाँ पे यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस, बताओ ये पिक्चर में क्या है, ये बताओ पहले मुझे. नीचे लिखा हुआ है साफ साफ, तब भी टाइम लगा रहे हैं, फिलामेंटस बीजीए नॉस्टॉक, राइट, फिलामेंटस बीजीए, राइट, फिलामेंटस बीजीए नॉस्टॉक. और इसके अंदर दिस नॉस्टॉक, इट इज फिक्सिंग नाइट्रोजन. नॉस्टॉक एंड एनाबीना, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन. व्हाई? बिकॉज दे हैव व्हाट. ठीक है, स्लाइड्स चेंज नहीं हुई हैं अभी. ओके, वेट वेट, not visible. Okay, I will just check. Okay, wait, just give me a second. साइनोबैक्टीरियल साइड ही लिखी हुई है अभी. ओके, डॉक्टर प्रियांश कह रहे हैं. जस्ट अ मिनट, आई एम चेंजिंग द स्लाइड. स्लाइड चेंज आपको विजिबल नहीं है, आप देखिए एक बार. Now is it visible? Now no ma'am, not visible. I don't know whether, एक second, just a minute. अब शायद विजिबल होगा, चेक करो. स्लाइड चेंज, टेक्निकल इशू है, स्लाइड आपको स्लाइड चेंज नहीं नजर आ रहा है. ऑल राइट, ओके, वी विल कंटिन्यू एंड दिस पीडीएफ विल बी डाउनलोडेड. नाउ if you can see the slide, now the slide is changed. All right, we'll continue with this and the PDF will be uploaded. Okay, yeah. साइनोबैक्टीरिया, ये जो फिलामेंटस बीजीए है, इसके अंदर नॉस्टॉक एनाबीना की अगर मैं बात करूं, नॉस्टॉक एनाबीना की अगर हम बात करें, नहीं, यू आर विजिबल, स्लाइड्स आर नॉट. ओके ओके, ऑल राइट. ओके, वी कैन
You can open an NCERT and an NCERT diagram of nostoc is given. Open your NCERT everyone. तो अगर स्लाइड चेंज नहीं तभी सेशन नहीं रोकेंगे हम लोग, राइट? तो आप एनसीईआरटी ओपन करिए. एनसीईआरटी में नॉस्टॉक का डायग्राम दिया कि नहीं दिया? एनसीईआरटी में नॉस्टॉक का डायग्राम दिया है ना? ओके, सो नॉस्टॉक एंड एनाबीना, दे आर फिलामेंटस एल्गी, राइट? उसमें एक डायग्राम दिया, छोटा सा डायग्राम है किसका? हेट्रोसिस्ट का, राइट? किसका डायग्राम दिया उसमें? हेट्रोसिस्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट what is a heterocyst. Hetero means different, cyst means a thick walled structure, right? Hetero means different. Figure 2.2, yes, absolutely right. Figure 2.2 की बात कर रही हूँ मैं, बिल्कुल सही डॉक्टर प्रियांश. Figure 2.2 heterocyst की, right? तो heterocyst में क्या है देखिए. हेट्रोसिस्ट एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, ओके? एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है जो क्या परफॉर्म करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसका मतलब द बीजीए विच आर नॉट हैविंग हेट्रोसिस्ट, दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन. जो बीजीए के अंदर हेट्रोसिस्ट नहीं है, नो. ऑसिलेटोरिया इज नॉट हैविंग हेट्रोसिस्ट बट स्टिल it can perform nitrogen fixation. So how you have to tackle the question in the exam? Exam में अगर question आता है how to tackle, as per NCERT, the forms, the BGA like nostoc and abina which are having the heterocyst, they only perform nitrogen fixation. But if somebody asks you a question in the NEET examination, can oscillatoria perform nitrogen fixation? Then we'll also write yes, but we have to keep this in mind that oscillatoria is not having the heterocyst. Yes, absolutely Divya, page number 19 पे लिखा, yes, page number 19. Okay, तो यहाँ तक concept clear है आपको? यहाँ तक concept clear है? All right, ठीक है. So we are going to continue this session in the next class. Okay, all right. And at 3 p.m. who is going to meet you? Dr. Sachin Kapur, right? And if you want the PDF of this notes, you have to join our Telegram channel, that is Neet Elixir. Neet Elixir, right? So we have a short 10 minutes break and then Dr. Sachin Kapur will be meeting you at 3 p.m. And today we do have special classes from 7 to 8, 9 to 10, 10 to 11, right? Right? तो कल मिलते हैं फिर दोबारा, ठीक है? कल हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे. तो पैरेलली ऑल्टरनेटिव डेज पे वी आर डूइंग बायोलॉजिकल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन.